बात और समझना आप, मैं इस टैक्स सिस्टम पे वापस आ रहा हूं. द न्यू टैक्स रिजीम, द न्यू टैक्स रिजीम प्रमोट्स more rational and less complex टैक्स सिस्टम. अब ये सरकार के ऊपर है कि इसको थोड़ा और अच्छा बनाए. ये अभी पूरी तरह से अच्छा नहीं बन पाया है. So it is on the government that they can make it better at the moment. It has not become very good at the moment. But new tax regime will promote rational and less complex tax system because it will remove the rebates. It will assure that people file their income once and then there is no further debate on that. So new tax regime is a simplified regime. अगर कोई आपसे पूछे new tax regime का फायदा क्या है, तो आप बोलेंगे what are the advantages of new tax regime? It's a simplified regime. It removes complexity of tax system, removes too many exemptions that we give. This is the benefit of the new tax regime. All right, this is the benefit of the new tax regime. Now see, when we talk about the further thing, अमन यादव तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो, मैं ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूं. That if concession is for 7 lakh, then what about 0 to 3 lakh? अब वीडियो दोबारा देख लेना कल या रात को, तुम्हें आंसर मिल जाएगा. देखना जरूर, लेकिन नहीं तो मिस कर जाओगे इन बातों को. बता चुका हूं ये बात. Now see, coming back to this, the next is we are talking about, the next part that we are talking about is direct taxes for cooperatives, and before I take you into direct taxes for cooperatives, I had to tell you one more thing, that now there is one more thing you should keep in mind. There will be tax charged, on all money sent abroad at 20%. All right, there will be tax charged on all money sent abroad at 20% except for education and health. पहले ये 5% पे चार्ज होता था और इसमें बहुत सारे और कंसेशंस मिलते थे. अब सरकार ने ये खत्म कर दिया है. There will be tax charged on all money sent abroad at the rate of 20% except for education and health. Earlier there used to be a tax put on this, at rate of 5%, and there were rebates here, but now there is no such rebate here. All right, that is the idea of it. Then there is another thing that has been done. The other thing that has been done is that the TDS threshold of 10,000 rupees for winning in a game, TDS threshold of 10,000 rupees for a winning in a game has been removed. Now whatever win people do, the tax will be deducted at source. पहले कानून था कि 10,000 रुपए तक का अगर आप जीतते हो अपने गेम्स में या गेम शोज में, तो उसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 10,000 रुपए के नीचे तक नहीं किया जाएगा. If somebody wins up to 10,000 rupees in a game, it will not be deducted on source in the tax collection. Now the government has removed it because it has been observed that many people try winning over 10 games, 1,000 rupees, 2,000, 5,000, and then don't share the tax with the government. So now government says up to 10,000, you got to pay the money across. So that is another thing. Then there is another part that you need to keep in mind. That is all insurance premium. So insurance policy, if people take above rupees 5 lakhs, will not be in tax concession category.
तो अगर आप प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा देते हो तो आप टैक्स कंसेशन कैटेगरी में नहीं रहोगे. If you are paying premium above 5 lakh rupees, then there will be no tax concession category. एक और काम किया गया है, the standard deduction, that is the deduction allowed to salaried individuals, has been improved to 52,500 rupees for salaried individuals and improved to 52,500 rupees for salaried individuals and 15,000 rupees for pension funds people. तो जिनको पेंशन मिल रहा है वो अपने टोटल इनकम में से 15,000 डिडक्ट कर सकते हैं टैक्स देने से पहले, और जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं जिन्हें अभी तक 50,000 रुपए अलाउड था उनको 52,500 रुपए अब अलाउड होने का प्रपोजल है. The salaried individuals now have a proposal of 52,500 rupees and those who pay pension get pension 15,000 rupees of standard deduction, that is while paying their tax they can deduct it from their taxable obligation. All right, that is also that has been introduced. अब cooperatives के लिए क्या क्या किया, सहकार से समृद्धि, ये एग्जाम में तुम्हें पूछ सकते हैं that what are the steps taken by the government to promote cooperatives in the budget. अब ये जो points मैं तुम्हें बता रहा हूँ, these are steps taken in the budget for promoting cooperatives. All right, these are the steps taken in the budget for promoting cooperatives. Now, when we look at the story here, first is new cooperatives established till 31st March 24 will get tax benefit of 15% tax on their income. अब ये इसलिए किया गया क्योंकि ये बेनिफिट कॉर्पोरेट्स को ऑलरेडी दे रखा गया था. दिस हैज बीन डन बिकॉज दिस बेनिफिट हैज बीन गिवन टू कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी. So the government says let's extend the same benefit to cooperatives also, so that it doesn't become a factor that cooperatives think that we have been discriminated against. तो चूंकि कॉर्पोरेट्स को ऑलरेडी सरकार ने ये बेनिफिट दिया है कि जो भी वो टैक्स इनकम उनको पे करना है, जो भी पैसा देना है, अगर वो न्यूली established startup है, then till 31st March 2024, if they start production or they are starting up, then they have to pay a tax of only 15% on their corporate income. जो पैसा कॉर्पोरेट देते हैं अपने प्रॉफिट पे, उसे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहा जाता है. The money paid by corporates on their income is corporate income tax. कंपनीज पे जो लगता है, और जब इंडिविजुअल पे, जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप पे या सोल प्रोप्राइटरशिप पे टैक्स लगता है तो वो पर्सनल इनकम में आता है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अनदर इज sugar cooperatives can claim payments made to sugarcane firms prior to 2016-17 as expenditure. ये एक तरीका है जिससे शुगर कोऑपरेटिव्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट का ऑब्लिगेशन कम किया जा सकता है. This is a method by which the sugar cooperatives will be allowed or will need lesser payments to be made. क्यों? क्योंकि शुगर कोऑपरेटिव्स मदद करते हैं गन्ना के किसानों की. ये जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, गन्ना किसान ही इसके मेंबर होते हैं. The sugarcane farmers are the member of sugar cooperatives, so it helps these sugarcane farmers because now if they have made an expenditure even before 2016-17 on paying to sugarcane farmers, they can deduct it in their taxable income. तो इससे इनका taxable obligation कम हो जाएगा, इनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा बच जाएंगे, जिससे ये अपनी modernization, upgradation, skill development इस पर ध्यान दे सकते हैं. If these small tax concessions are considered, then it helps them to get modernization, skill development, tax concession, etc. All right, I mean tax development, etc. Then the other is for cooperatives, the benefits have been increased. Earlier, the limit was 1 lakh per member to withdraw without tax deducted at source. Now it has been made 2 lakhs per member, provided for primary agricultural cooperative society and primary cooperative agricultural and rural development banks for deposits and loans. So this will allow more flexibility. This will allow more flexibility to members to withdraw
and deposit their funds, to withdraw and deposit their funds for the purpose of cooperatives business. Again, this is a step of ease of doing business, gives more flexibility. You know, this is an aspect of ease of doing business. All right, this is more flexibility to these people, where they will be allowed that 2 lakh rupees per member. Earlier it was 1 lakh. 2 lakh rupees per member will be provided for withdrawal and deposits. All right, for withdrawal and deposits. तो जो ये पैसा जमा करेंगे अपने कोऑपरेटिव में या विड्रॉ करेंगे, 2 लाख रुपए तक की फ्रीडम दी गई है कि आप ये कर सकते हो बिना किसी टैक्स डिडक्शन वगैरह के. तो ये एक अच्छी शुरुआत है. दिस इज अ गुड बिगिनिंग, अलाउज मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द cooperatives. And then there is a highest limit of 3 crores for cash withdrawal from TDS. You know, that is, I mean, this is cash withdrawal from cooperatives without TDS. Cash withdrawal from cooperatives without TDS. That highest limit of rupees 3 crores has been set. अगर आप अपने कोऑपरेटिव सिस्टम से 3 करोड़ रुपए तक विड्रॉ करोगे, पहले ये लिमिट 2 करोड़ की थी, अगर आप 3 करोड़ तक विड्रॉ करोगे तो आप पर कोई टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं लगेगा. So these are some benefits. Again I repeat, you should keep making sure that overall, always keep in mind, keep making sure that these points are remembered from your exams point of view as the steps taken in the budget for developing of cooperatives. Steps taken in the budget for development of cooperatives. Another is that there will be a proper date of incorporation for income tax targets for startups will be recorded. Proper date of incorporation, किस दिन रजिस्टर हुए वो एक डेट फिक्स किया जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि स्टार्टअप्स पे ज्यादा टैक्स लग गया या कम टैक्स लग गया. You know, that is again is something that will be applied. You know, that कोई confusion इस बात को लेकर ना रहे. Proper you know, things will be put up. Also for MSMEs, you know, for MSMEs there will be income tax target, you know, there will be presumptive taxation by 31st March 2024, and they have increased the limit of that presumptive taxation. But this last point I will discuss with you when I am discussing industrial development in a little while. ये last point आप थोड़ा रुक जाओ, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ. ये जो पॉइंट है, प्रॉपर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकम टैक्स टारगेट्स फॉर द स्टार्टअप्स विल बी रिकॉर्डेड, इसका बेनिफिट ये होगा, इट विल अलाउ better registration methods and formalization. It will encourage formalization ताकि ज्यादा लोग रजिस्टर करें, टैक्स का कंसेशन लें, खुद को फॉर्मलाइज्ड सिस्टम में रखें. So that's another benefit that we have. Then remember, there is one more step that they have taken in the tax. The other step that they have taken in the tax, I will teach you presumptive taxation. Shyam and Shivam, wait on that. I will be teaching you the idea of presumptive taxation. Wait on that. एक और बात आपको दिमाग में रखना है, वो ये है that angel tax will be levied on all foreign investors in the startups. I'm sorry. Angel tax will be levied on all foreign investors in the startups. पहले क्या होता था? I'm sorry. पहले क्या होता था कि ये एंजल टैक्स नहीं लगता था.
ये एंजल टैक्स नहीं लगता था अगर स्टार्टअप्स में कोई फॉरेन फर्म इन्वेस्ट करते थे. इफ अ फॉरेन फर्म इन्वेस्टेड इन स्टार्टअप्स देन एंजल टैक्स वाज नॉट पुट. अब आपके मन में आएगा ये एंजल टैक्स क्या है? ये एंजल टैक्स 2012 से इंट्रोड्यूस किया गया. दिस एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2012. So in this angel tax system, what was done there was that if you are investing in a startup and by chance the amount you have quoted for their share is higher than the fair price of that share, then you had to pay a tax on that. अगर आपने स्टार्टअप में अपना एक्सपेंडिचर किया और अगर आपका जो खर्चा है जो आपने अब स्टार्टअप की वैल्यूएशन की अगर स्टार्टअप के फेयर वैल्यूएशन से ज्यादा निकली तो आपको उस डिफरेंशियल पे टैक्स देना पड़ेगा. I repeat again, if you have invested in a startup and you have committed a share value for that startup, if the fair value, market value of that share comes out to be lesser than your quoted value, then on the difference you have to pay a tax. The reason was this method was actually used for money laundering. बहुत लोग क्या करते थे अपना पैसा या खर्चा दिखाने के लिए ब्लैक मनी छिपाने के लिए स्टार्टअप की वैल्यू अगर शेयर की एक्चुअली 10 रुपए है तो उसको 20 रुपए दिखा के खरीद लेते थे ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े. और बाद में जब स्टार्टअप लिस्ट हुआ तो उनके शेयर अपने नॉर्मल वैल्यू पे आ गए और किसी को पता ही नहीं चला कि ब्लैक के पैसे लग गए इसमें. सो द गवर्नमेंट इन 2012 हैड इंट्रोड्यूस्ड दिस एंजल टैक्स टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम. दैट एंजल टैक्स, एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं और बदले में शेयर्स इमीडिएटली डिमांड नहीं करते. Angel investors are people who put their money in startup and in return they do not demand shares immediately. And फिर क्या होता था कि शेयर वैल्यूएशन जब कम आती थी तो ये अपना लॉस दिखा देते थे इसको और टैक्स बचा लेते थे. That I had put more money in this startup, now the share value is less, I have made a loss and therefore I should get some concession. एंजल टैक्स लगाया गया कि अगर आप शेयर्स खरीदते हो स्टार्टअप के और अगर उसकी वैल्यू कम आती है फेयर प्राइस तो आपको वो डिफरेंशियल पे टैक्स देना पड़ेगा. दिस वाज डन टू डेटर द इन्वेस्टर्स और पीपल फ्रॉम यूजिंग दिस मेथड एज मनी लॉन्ड्रिंग. देयर वाज अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट सिस्टम दैट सिमिलर टैक्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो बिकॉज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड वाज मेनी पीपल were bringing money from foreign and then many people were bringing money from foreign and then investing in startups and then there was no angel tax on foreign investors who invested in startups. So from this year's budget the government says angel tax will not only be on the domestic investors investing in startups but it will also be on the foreign investors to suspend the idea of money laundering through abroad. कि अगर आप बाहर से कोई ऐसा बचाना चाह रहे हो ला रहे हो देश में रोकने का एक तरीका है ये. Some people say that an angel tax if you invest, some people say that if you put angel tax on investors it will discourage investors. True, if you put angel tax on investors it will discourage investment. So you have to make a choice. You have to make a choice between angel tax. You have to make a choice between angel tax and you have to make a choice between allowing money laundering possibilities. तो सरकार को एक थिन लाइन पे वर्क करना पड़ता है कि या तो एंजल टैक्स अलाउ कर दें ना लगाएं और मनी लॉन्ड्रिंग की पॉसिबिलिटी रख लें या एंजल टैक्स अलाउ लगा दें और मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा कम करें भले ही उससे इन्वेस्टमेंट थोड़ा डिस्करेज हो. सो व्हेनेवर समबडी सेज दैट इज एंजल टैक्स a regressive tax, is angel tax a tax to discourage investment, say yes, but then there is a choice to be made whether I don't charge an angel tax and let a possibility of money laundering remain or I charge angel tax and encourage the true investors, correct investors to keep investing and discourage money laundering possibilities in the country. And I think an angel tax at a relatively much rational rate is not a bad idea because money laundering is a clear and present danger in Indian context. हमारे यहाँ चोरी से पैसा लाना ले जाना बड़ा commonly लोग करते हैं, रोकना जरूरी है. तो अगर आपसे कोई कहे रोकना चाहिए या नहीं, वो रोकना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बढ़ाना ना पड़े बस. All right, this is for startups. Yes, Varun. All right, let's see this then. We take it further now.
Another thing, and then before I take you into rural development, मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूं कि टैक्सेशन सिस्टम में अच्छा क्या किया जा सकता था. You know, what could have been done better in taxation mechanism? What could have been done better in taxation mechanism? So I'm trying to tell you that आप कुछ बातें दिमाग में रखोगे जहां मैं आपको बताना चाह रहा हूं possible improvements in taxation system. अब देखो है क्या, एक तरह से ये क्रिटिसिज्म है, तुम्हें ये लिखने आना चाहिए. ये मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि बजट ने क्या नहीं किया. तो जब तुम आंसर लिखो अपना तो उसे पॉजिटिव बना के लिखना चाहिए. Even when you are writing a criticism of an idea, suggest the solutions, it becomes positive and you are criticizing nevertheless. So I am criticizing this. The PDF will be uploaded after the lecture. Alright? Alright, so I am criticizing the taxation policies, few of them, but the idea is that it should be about suggestion oriented. तो पहला सजेशन हम क्या देते हैं? Rationalize exemptions by reducing them. जो एग्जेम्पशन हम ढेर सारे देते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और ऑल में, उसे रैशनलाइज करो, उनको रिड्यूस करके. बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं और लोग क्या करते हैं, जब जबरदस्ती के सर्टिफिकेट बना लेते हैं और उन एग्जेम्पशन से बचने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर टू मेनी एग्जेम्पशंस एंड पीपल मेक सर्टिफिकेट्स एंड ऑल एंड ट्राई सेविंग देमसेल्व्स फ्रॉम दोज एग्जेम्पशंस. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इज that there are too many exemptions. Rationalize exemptions by reducing them. The second idea is that we can put across is security transaction tax should be removed. Security transaction tax should be removed. देखो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है जब लोग मार्केट में शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं. It's a small tax, but a tax nevertheless. So this tax is levied when people buy shares or bonds in the market. Now this tax was levied, then the government replaced it by long-term capital gains tax. Then when the government removed long-term capital gains tax, again they introduced securities transaction tax. When the government removed long-term capital gains tax, again they introduced securities transaction tax. अब 2017 से फिर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आया, लेकिन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हटाया नहीं गया. तो 2004 में जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाया गया था तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया गया था. When the long-term capital gains tax were removed in India, securities transaction tax was introduced in India. Now my point to you is, again when long-term capital gains tax has been introduced, securities transaction tax should have been removed. That has not happened in India. This is the challenge we are saying that हटा दो. ये एक तरह का डबल टैक्सेशन हो जाता है. लोग शेयर खरीद रहे हैं तब भी आप टैक्स लगा रहे हो, बेच रहे हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं तब भी टैक्स लगा रहे हो, जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तब भी टैक्स लगा रहे हो. कपड़े वपड़े भी ले जाए लोगों के हम टैक्स के नाम पर. तो जब इतने टैक्स हम लगा देंगे तो हमारे जो लोग हैं वो टैक्स इवेजन करने लगेंगे. तो इसीलिए जरूरी है कि टैक्स रैशनल रहना चाहिए. साथ में एग्जेम्पशन ढेर सारे दे दिए तो जिनको टैक्स की चोरी करनी है वो खुलेआम कर लेते हैं और बहुत आराम से कर लेते हैं. जो बेचारे सर्विस क्लास में है वो फंस जाते हैं. तो ये हमें सिस्टम ठीक करने की बात कर रहा हूं. दैट दोज who are in service class bound to pay tax have the tax burden. Those who are otherwise not there can save tax by showing expenditure, don't have to pay tax. We should improve upon that. Another suggestion that we give is bring corporate tax and income tax in synchronization. अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स को अलग अलग रखोगे, मैं बात कर रहा हूं यहां पर्सनल इनकम टैक्स
और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। अगर आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स को सिंक्रोनाइज नहीं रखोगे तो जानबूझ के लोग, अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स का एक हायर लेवल पे जाकर ज्यादा हो जाते हैं और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के रेट्स कम रहते हैं। एट हायर लेवल्स ऑफ इनकम, personal income tax levels go up to 39%, go up to 37%, while corporate income tax is hardly 27% if you are showing it as a turnover of less than 400 crore, 25% plus surcharge. तो उससे क्या होता है, what many people do, they are actually earning personal income tax, they set up a small company and show themselves as a corporate. और सरकार खुश होते हैं, बोलते हैं देखो कितने नए कॉर्पोरेट रजिस्टर हुए। वो नए कॉर्पोरेट रजिस्टर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग पर्सनल इनकम टैक्स नहीं देना चाह रहे। कारण क्या है, अगर मैं अपनी इनकम 2 करोड़ के ऊपर दिखाऊंगा, if I show my income above 2 crore in a personal income tax regime, I will end up paying 39%. In a corporate income tax regime, I'll pay 27.5%. अपने आप लोग दिखा देते हैं मैं कंपनी हूं, मैं पर्सनल इनकम नहीं अर्न कर रहा। ये थोड़ा हमें बचना जरूरी है। That synchronization we need between the two. And another thing that we need to do is that steps should be taken. Steps should be taken to improve tax base. YouTube पे ही मेरा एक और लेक्चर है, आपसे सर्च करके देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कैसे लगाना चाहिए, किन पर लगाना चाहिए। तो अभी मैं उस डिस्कशन में नहीं ले जा सकता तुम्हें, बट इफ यू विल सर्च ऑन YouTube, it's a 22 minutes lecture on agricultural income taxation in India. So you can see that to have a holistic view of agricultural income taxation in India. So right now I won't speak much on it, but imagine in a country where we are taxing people earning above 50,000, 55,000 rupees in urban areas like Delhi and not taxing people who are moving in BMW and Audi in the rural areas of India. I think that's not justified. You know, मैं रूरल इंडिया में गरीब किसान बेचारा बस ऑडी A4 में घूम रहा है, BMW X3 में घूम रहा है, गरीब है बेचारा, क्या करेगा, इतना ही मैनेज कर पा रहा है, उनको टैक्स नहीं लगा रहे। और जो रिच इंडिया है, जो पुअर इंडिया है रिलेटिवली, 55,000 60,000 दिल्ली में अगर कोई कमा रहे हैं और अगर फैमिली ऑफ 4 है तो वो सस्टेन ही कर रहे हैं, बस उनके लिए बहुत स्कोप नहीं है हमारे मेट्रोपॉलिटन्स में, बट वो टैक्सेबल इनकम में आने का खतरे में है। सो दैट इज व्हाट वी शुड think about, that we should rationalize the structure and improve the tax base. We should use the trail. इस पर रिसर्च ज्यादा होना चाहिए कि कौन से और नए लोग हैं जिनको टैक्स में लाया जा सकता है। There are many traders who are not paying tax. There are many people in unorganized sector not paying tax, earning enough. There are many tuition centers not paying tax, beauty salons not paying tax. तो ये जगह है जहाँ टैक्सेशन की कोशिश की जानी चाहिए। टैक्स बेस बढ़ेगा उससे। टैक्स बेस मतलब आप कितने ट्रांजैक्शन पे और कितनी इनकम पे टैक्स लगा पा रहे हो। So if you will increase the base of tax, if you can take more transactions in picture, if you can take more income in picture, then the overall tax burden on each individual can be reduced. So these points is what I will suggest you should keep in mind when I am telling you about the steps government can take to promote टैक्सेशन। तो ये चीजें इस बजट में नहीं की गई, ये करने की आशा थी मुझे। अब अगर ये नहीं की गई हैं, वी नीड टू इंप्रूव अपॉन दैट। यू नो, दीज आर थिंग्स वी नीड टू improve upon. All right, is on differential amount. Yes, Bhaskar. All right, let's see this then. Thank you for saying this, Ashish. Okay, okay, we will discuss GST. You give me some time. You know, we will be discussing this. So these are the indirect taxes that have been done across. एक और चीज की गई है बजट में, that is customs duty have been increased on certain things in order to protect those enterprises, and customs duty have been reduced on certain things in order to discourage, you know, less production. तो कुछ रॉ मटेरियल्स पे कस्टम ड्यूटी कम किए गए हैं ताकि उनको इंपोर्ट किया जा सके इंडिया और उन्हें प्रोडक्शन की जा सके उनकी। यू नो, लैब ग्रोन डायमंड के भी रॉ मटेरियल पे जो डायमंड सीड्स होते हैं उन पे भी कस्टम्स ड्यूटी जैसे कम की गई है। तो ये कस्टम्स ड्यूटी कम करने का पर्पस है कि चीजें भारत में इंपोर्ट हो, रॉ मटेरियल, और वो फिर भारत में बने। अब ये बात मैं तुमसे करने वाला हूं 5 मिनट में। अब मैं तुम्हें थोड़ा आगे ले जाता हूं, कुछ बातें करते हैं ऑन
steps taken in the budget for rural development. You know, steps taken in the budget for rural development. इसमें agriculture पे भी ध्यान देंगे. All right, steps taken in the budget for rural development, and then we will talk about agriculture also in this. तो एक तो जितने भी schemes हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था on agriculture, वो सारे ऐड करोगे इसमें. All schemes for agriculture, like, you know, we talked about agricultural accelerator fund, and we talked about Matsya Sampada Yojana getting 6,000 crore rupees extra fund. We talked about horticulture getting 2,200 crore extra fund. ये सारे जो schemes मैंने तुम्हें बताए थे, all those will come, all schemes announced for agriculture. ये definitely अपने दिमाग में बिठा लो. मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, what are the steps taken in the budget to promote agriculture? So all those 4-5 schemes we did on agriculture under the Saptarishi scheme program that I was teaching you should come over here. तो एक तो वो लिख दोगे. दूसरा उन्होंने क्या किया है? They have increased budget for blue revolution by more than 40% of revised estimates of fiscal year 23. जो fiscal year 23 के revised estimate थे, उनके मुकाबले blue revolution पे 40% budget बढ़ाया गया है. तो ये एक और पॉइंट याद रखोगे फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो दिस विल प्रमोट फिशरीज सेक्टर, एंड रिमेंबर दिस इज ऑलरेडी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर. जो फिशरीज सेक्टर है, दिस हैज बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 11% per annum from 2014 when we introduced मत्स्य संपदा योजना. तो जब से हमने मत्स्य संपदा योजना इंट्रोड्यूस किया है, तब से फिशरी सेक्टर करीब 11% पर एनम पे बढ़ रहा है. तो ये दिखाता है कि ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है ऑफ प्रमोटिंग बजटरी सब्सिडी ऑन थिंग्स. एक और बात आप दिमाग में रखेंगे, दैट इज फर्टिलाइजर सब्सिडी. अब इसको लेके बहुत हंगामा भी है, इसका मैंने तुम्हें ब्रेकअप भी दे दिया है. You know, the breakup is that 1.75 lakh crore and is being given as fertilizer subsidy. Urea is around 1.3 and nutrition based subsidy at 0.44 lakh. अब ये कहा जा रहा है, सुनना खूब ध्यान से, ये एनालिसिस जरूरी है. अखबार में कुछ और ही बातें आ रही हैं, पर तुम्हें ये सच्चाई जाननी जरूरी है. सो ये कहा जा रहा है, it is being said, oh, we gave 2.25 lakh crore fertilizer subsidy last year. And we are giving 1.75 lakh crore this year. This is too less for the farmers. अब ये समझना जरूरी है आपका. पिछले साल budgeted amount था 1.75 lakh crore. Last year's budgeted estimate for fertilizer subsidy was 1.75 lakh crore. Then Putin had an attack of testosterone और यूक्रेन में लड़ाई हो गई. तो उसके वजह से फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए दुनिया भर में. हमारा पोटेशियम का फर्टिलाइजर, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, और फॉस्फोरस का फर्टिलाइजर, डायमोनियम फॉस्फेट, ये ज्यादातर इंपोर्ट होकर आते हैं, और इनमें से बहुत सारा इंपोर्ट होता है यूक्रेन से. सो लॉट ऑफ आवर फर्टिलाइजर गेट्स इंपोर्टेड एंड अ लॉट ऑफ इट गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन. सो नाउ विद द वॉर इन यूक्रेन इट बिकेम अ प्रॉब्लम देन दैट प्राइसेस वेंट अप एंड गवर्नमेंट हैड टू रिवाइज फर्टिलाइजर सब्सिडी from 1.75 lakh crore to 2.25 lakh crore. Now the war is kind of become an internal war, isn't it? अब ये दुनिया ने टर्म पे आ गए, अच्छा ठीक है, ये दोनों लड़ रहे, लड़ने दो, हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में. उस चक्कर में क्या है कि फर्टिलाइजर के प्राइसेस अब कम हो गए हैं. अगर फर्टिलाइजर का प्राइस कम हो गया है, तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम हायर सब्सिडी दें उस पर फिर. So if somebody tells you that reduced fertilizer subsidy is a problem, please rebut it by saying, look, last year also the fertilizer subsidy was planned at 1.75 lakh crore. This year also fertilizer subsidy is planned at 1.75 lakh crore, because in between we had to give a subsidy of 2.25 lakh crore because of the war in Ukraine. Now the war in Ukraine is done. We don't have to and just it. The war is going on, but it is not affecting the fertilizer prices anymore. They have come down by 40% in the last 4 months. So now there is no reason to keep giving high subsidy on fertilizer. Also, Economic Survey Volume 1, Chapter 9, 16-17 said that fertilizer subsidy is one of the wasteful subsidies in India,
because it doesn't reach the small farmers. So even if we want to give fertilizer subsidy, we should gradually think about shifting to direct benefit transfers rather than giving subsidy indirectly via fertilizer companies. इससे हमारे देश का ज़्यादा नुकसान हो रहा है. और 2019-20 का बजट अगर उठा के देखोगे, if you will see the budget of 2019-20, you will have a very interesting take there. You will see that the fertilizer subsidy was not even 1,05,000 crore rupees. So we have increased the fertilizer subsidy tremendously in the last 4 years. So complain that fertilizer subsidy has been reduced is more political than academic. Kindly ignore that and please keep this discussion in your mind. Then comes my next point, food subsidy. अब ये भी खूब हंगामा हो रहा है, हम खाना कम कर रहे हैं, गरीब क्या करेगा. तो important ये है again, food subsidy of 1.97 lakh crore is again something we need to be careful about. इस 1.97 lakh crore food subsidy के अंदर सरकार ने कहा है कि 1.37 lakh crore 1.37 lakh crore will be FCI procurement and 59,000 crore will be procured directly